This says GST is an indirect tax levied on goods and service in India. I want to explain this point a bit. So when we talk about taxes, बेटा दो तरीके के टैक्स हो सकते हैं. One is called direct tax. One is called as indirect tax. डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? वो टैक्स जो हम डायरेक्टली चार्ज करते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स. You earn income and you pay tax on income. That's a direct tax. है ना? So direct tax is basically the tax which is charged on the same person. तो एक तरीके से अगर हम थोड़ा इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बोलें, इकोनॉमिक्स में हमने टैक्सेशन वी हैव स्टडीड दैट, मतलब हमारा इंसिडेंस ऑफ टैक्स है ना, एंड चार्जिंग ऑफ टैक्स सेम है, राइट? सो इंसिडेंस मतलब ऑन whom the tax is falling, टैक्स किस पे चार्ज हो रहा है. So the tax is paid by the people and the tax was also charged on the people. लोगों से ही गवर्नमेंट ने टैक्स मांगा और लोगों ने ही टैक्स पे किया. दैट इज इनकम टैक्स. मैंने इनकम अर्न की, गवर्नमेंट ने मेरे को इनकम टैक्स पे करने को बोला और मैंने ही गवर्नमेंट को टैक्स पे किया. दैट इज डायरेक्ट टैक्स. बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हेन द इंसिडेंस एंड द चार्जिंग आर ऑन डिफरेंट पीपल. मतलब गवर्नमेंट ने टैक्स चार्ज किया मैकडॉनल्ड से ऑन इट्स बर्गर. मैकडॉनल्ड्स ने ये टैक्स कंज्यूमर पे ट्रांसफर कर दिया. एंड व्हेन यू ईट दैट बर्गर, जब आप वो बर्गर खाते हो जो 25 रुपीज का है, यू आर पेइंग 28 ऑन इट. व्हाई? बिकॉज यू आर पेइंग टैक्स ऑन इट. कंज्यूमर इज पेइंग द टैक्स, राइट, टू McDonald's. McDonald's is paying it to the government, right? So you are indirectly paying tax to the government, not directly. आपने जाके हर बर्गर पे जो अमाउंट है वो जाके गवर्नमेंट को नहीं पे कर दिया कि ओके टेक दिस टैक्स. You paid it to the producer and producer paid it to the government. आपने प्रोड्यूसर को दिया, प्रोड्यूसर ने गवर्नमेंट को दिया. So this becomes an indirect tax system. All goods and service taxes, जितने भी goods पे पहले भी लगते थे टैक्स, all of those were indirect taxes. So beta, what are we learning? We are learning that GST is an indirect tax levied on goods and services in India. Okay, come forward. It has consumed many indirect taxes, so it is comprehensive. So I will talk about this first. Comprehensive. कॉम्प्रेहेंसिव का क्या मतलब है? देखो पहले इंडिया में ना बहुत सारे टैक्सेस थे एंड आई विल शो यू दैट इन द कमिंग नोट्स ओनली. सो देयर वर सो मेनी टैक्सेस इन इंडिया. क्या क्या टैक्सेस थे? वी हैड सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट टैक्स. इंडिया में देयर वर मल्टीपल टैक्सेस दैट वर चार्ज. इन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमने एक अम्ब्रेला के अंदर लिया है. We brought it under one umbrella and we called that as GST. So how can I just remember this? But I can remember it exactly like an umbrella. I can say that this is my GST. This is my GST. ये GST है. And पहले क्या थे? इस अम्ब्रेला के अंदर जो अलग अलग टैक्सेस आते थे, we have brought it under one roof. So we had the custom duties, we had entertainment tax, octroi tax, sales tax, special sales tax. All these taxes, जो भी अलग अलग taxes होते थे, we have brought them under one roof and that is called GST. So क्योंकि GST has made things comprehensive, it has brought things together. That is why it is called as a comprehensive tax. Okay, fine. Now let's move forward. It is also called as a multi-staged tax because it is levied at every step of production process. I've already explained you this.
you can just underline the word multi-stage. So underline multi-staged. Okay, now let's go ahead and read it further. In India, GST is a tax levied uniformly throughout the nation on the supply of goods and services. इसका थोड़ा सा समझो. How many of you have traveled by railways? All of us. कभी एक बारी लाइफ में, दो बारी लाइफ में हमने हमेशा रेलवे से ट्रैवल किया. जब when the train is passing, suppose I travel from north to South India. I'm going from Delhi to Kerala. Okay. I am passing through multiple states. मैं अलग अलग स्टेट से जा रही हूँ. हर स्टेट से मैं एक पानी की बॉटल खरीदती हूँ. उस वाटर बॉटल में it's written that price in this state is this much, other states is this much, and that price of the water keeps changing, suppose. What does this mean? इसका क्या मतलब है? मतलब सेम प्रोडक्ट अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्राइस पर है ना? एक और एग्जांपल लेते हैं हम. कंसिडर द एग्जांपल ऑफ पेट्रोल. When you go from one state to another and you get your car filled with petrol, the price differs. हर चीज का, हर पेट्रोल का from one state to another, the price will be different. है ना? Take another example. But what used to happen is the following. Suppose I tell you that my product, it is manufactured in Kerala. Let me give you this example. Suppose I tell you that my product, it is manufactured in, say, Assam. And this has to reach all the way to Delhi. तो इसमें बहुत सारे स्टेट के बॉर्डर्स आएंगे. स्टेट बॉर्डर्स, राइट? अर्लियर हर स्टेट बॉर्डर पे, जिस स्टेट बॉर्डर पे आप थे, हर स्टेट बॉर्डर पे you have to pay some tax. So by the time this product will reach Delhi, ये बहुत इन्फ्लेट हो जाएगा. इस पे बहुत ज्यादा प्राइस इसका बढ़ जाएगा. क्यों? क्योंकि मैंने जो स्टेट बॉर्डर मेरे ट्रक ने पास किए, at every state border I paid tax, and I finally reached Delhi. There is no uniformity. अगर यही प्रोडक्ट को असम से केरला जाना है तो नंबर ऑफ बॉर्डर्स अलग होंगे, टैक्स अलग होगा. अगर दिल्ली जाना है, नंबर ऑफ बॉर्डर्स अलग होंगे, टैक्स अलग होगा. So when the same product had to reach different parts of the country, its price kept on changing. उसका price continuously बदल रहा था. That means there was no uniformity. है ना? Price uniform नहीं था. But now that's not the thing. We have the same tax rate on the product, and वो across the nation same ही है. So this means that the system is uniform. हमारा जो tax है वो uniform है. So GST is bringing uniformity throughout the nation on the supply of goods and services. Okay, fine, continue. It is also imposed on goods imported from outside the country. So even on imports, GST is plugged in. Clear? Okay, come to the next point. GST integrated the country into a common market by removing barriers across state. यही बात मैं समझा रही थी कि ये जितने भी barriers थे, इन barriers को GST ने remove कर दिया. कैसे remove किया? क्योंकि अब एक common tax rate है that will be employed. So there is a common tax rate that I will be putting, right? There will no more be interstate taxes that you will be paying like this, which will differ. है ना? कि ये state तो 4% charge कर रहा है और ये state 7%. It's not that thing, right? So it has integrated the country into a common market. एक common market आ गई है. आपको same price मिलेगा products का by removing barriers across states. So all the barriers have been removed, right? And enabling smooth flow of goods from one state to another.
तो क्योंकि अब मेरे को बार बार ट्रक को रोककर अलग अलग टैक्स रेट नहीं पे करना, तो जो हमारे गुड्स का फ्लो है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो गया, वो बहुत ही ज्यादा इजी हो गया। ओके, फॉरवर्ड। बिफोर जीएसटी द टैक्स रेट ऑन द सेम गुड्स वर डिफरेंट। तो जीएसटी से पहले सेम गुड्स पर हमारा जो टैक्स होता था वो बहुत अलग होता था, हर स्टेट का अलग टैक्स रेट होता था। बट जीएसटी हैज ब्रॉट इन यूनिफॉर्मिटी। आई होप दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन कि जीएसटी यूनिफॉर्मिटी लेकर आया है, हर स्टेट को अलग अलग टैक्स नहीं चार्ज करना, अब एक ही टैक्स चार्ज होगा। So beta, this you can write under the heading introduction of GST. Please write down the heading. ये GST की introduction थी, introduction of GST.